सरकार बिल्कुल चुप रहेगी। जिस दिन डेथ हो जाएगी उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आएगा और सैडन्ड बाय द डिवाइस। अरे मुझे तो बड़ा बुरा फील हुआ। Well, I think all of us are very concerned for his health and his life, and we hope that it ends well, and all of us are hoping that he ends his fast. Yes. Looks after his health. लोग फाइनली रियलाइज कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करने वाली सोनम वांगचुक को लेकर। तो उल्टा लोग सोनम वांगचुक से ही अपील कर रहे हैं कि वो अपना फास्ट तोड़ दें। यार मैं अभिनेता हूँ, नेता नहीं हूँ। उन्हें बस अपनी वर्ल्ड ट्रिप्स करनी है, फॉरेन लीडर्स के सामने जाकर खीखी करनी है। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकती। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल 111 दिन के अनशन पर बैठे थे गंगा की सफाई के लिए, सैंड माइनिंग के खिलाफ। उनकी सरकार से अपील थी कि सरकार गंगा को साफ करे, सैंड माइनिंग को रोके, और उसी चीज़ को लेकर वो फास्ट पर गए थे। और पता है 111 दिन तक वो फास्ट पर बैठे रहे, सरकार का मुंह तक नहीं खुला। और जिस दिन उनकी मृत्यु होती है उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, सैडन्ड बाय द डिमाइस ऑफ प्रोफेसर जीडी अग्रवाल। तब उन्हें एकदम से उदासी फील होती है। अरे मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है इनकी मृत्यु। I don't want Funsuk Wangdu to die. कोई हक से बाहर की बात नहीं कर रहा है इसमें। ये कोई सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है। ये बात है स्टूडेंट्स के हक की, उनके फ्यूचर की, हमारे देश के फ्यूचर की। आई वुड रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट टू प्लीज लिसन टू द वॉइस ऑफ द पीपल। 20 days, that's how long Sonam Wangchuk has been on an indefinite hunger strike. But today, the conversation is no longer just about the protest. It's also about the different reactions coming from across the entertainment industry. Some public figures have appealed for Wangchuk to end his fast. Others have voiced support for his cause or called for dialogue. And Aamir Khan's latest remarks have brought back an old debate about Three Idiots all over again. Here's exactly what he said. You were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk, that's what I'm told. No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film Three Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Just recently he said that Yes. no, he's wrong. Maybe that's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the two writers, nor we didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of Three Idiots for us to respect him and the work that he does. But do you have to say anything about this? Just from a factual point of view, I want to tell you that I neither. It's Raju never been nor- clarified before this. Yeah. In fact, Mr. Sonam has said this. Okay. He also has said that the character is not based on him. He has also clarified. But do you have anything to say about his fasting for 19 Well, days? I think all of us are very concerned for his health and his life, and we hope that it ends well, and all of us are hoping that he ends his fast and Yes. looks after his health. Speaking at a British Film Institute event, the actor addressed a belief that has existed for years. Many people have long believed that his character Funsuk Wangdu in Three Idiots was based on Sonam Wangchuk. The discussion returns recently after actor Omi Vaidya, who played Chatur, released a video supporting Wangchuk and referred to Funsuk Wangdu while making his appeal. Really important for you because I don't want Funsuk Wangdu to die, and I don't think you want him to either. So let's see what we can do. Please retweet, please post on your Instagrams. And if you really care, you can even reach out to your local, government officials, your national government officials, and tell them that this is something needs to be done, about these issues, about Sonam Wangchuk, because, these things matter. Now, responding to what he had to say about the hunger strike, Aamir also expressed concern for Wangchuk's health. Well, I think all of us are very concerned for his health and his life,
and we hope that it ends well, and it all of us are hoping that he ends his fast and looks after his baby. While Amir Khan's remarks left many on social media disappointed, another voice which is strong enough on the issue came from YouTuber Dhruv Rathi. He argued that the conversation should not be limited to asking Wangchuk to end his fast. Instead, he questioned why the focus wasn't also on the issues behind the protest. He criticized the government, especially Prime Minister Narendra Modi, and also referred to environmental activist G.D. Agarwal while expressing concern about Wangchuk's health. सरकार बिल्कुल चुप रहेगी। जिस दिन डेथ हो जाएगी उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आएगा और सैडेंड बाय दैट न्यूज़। अरे मुझे तो बड़ा बुरा फील हो रहा है। लोग फाइनली रियलाइज कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करने वाली सोनम वांगचुक को लेकर। तो उल्टा लोग सोनम वांगचुक से ही अपील कर रहे हैं कि वो अपना फास्ट तोड़ दें। उन्हें बस अपनी वर्ल्ड ट्रिप्स करनी है, फॉरेन लीडर्स के सामने जाकर खी करनी है। इस पूरी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि अब सारी जनता साथ में मिलकर आवाज उठाए। मोदी कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन हर एक ऑपोजिशन लीडर से मैं अपील करना चाहूँगा। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर प्लीज़ 20 जुलाई को मार्च में पार्टिसिपेट करो और इसे एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाओ। Then came Vivek Oberoi, who was asked directly about Wangchuk's protest, and the actor said he doesn't usually comment on political matters, calling himself an actor, not a politician at the same time. He added that every voice should have space in a healthy democracy. यार मैं अभिनेता हूँ, नेता नहीं हूँ, तो मैं पॉलिटिकल चीजों पे ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देता हूँ। हम तो ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। लाइफ में बहुत कुछ देखने और सीखने को मिल रहा है। ऑब्जर्व ये किया कि ये भी एक नई चीज थी और मुझे लगता है कि एक हेल्थी डेमोक्रेसी में हर आवाज को अपनी जगह मिलती है। ये लोगों ने अपना अगर आवाज व्यक्त किया है तो ये एक हेल्थी डेमोक्रेसी का साइन है। Alongside these reactions, many actors have publicly expressed support for Wangchuk or urged dialogue. Sonakshi Sinha shared a message saying she couldn't remain silent. ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। Singer Vishal Dadlani released a video from the United States saying if he had been in India, he would have stood at Jantar Mantar himself. He urged the government to engage in dialogue. मेरी बस यही तमन्ना है कि उन्हें कुछ हो ना। My request to him is कि अनशन तोड़ दें। My request to the government is उनकी बात सुन ले। कोई हक से बाहर की बात नहीं कर रहा है इसमें। Comedian Kunal Kamra voiced support for Wangchuk at the protest site. सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। हमारे देश का एक और गांधी 17 दिन से बिना खाए यहाँ बैठा है और गोडसेवादियों को कोई चिंता नहीं है इस बात की। आप स्टूडेंट हो, कोई किसान है, कोई बेरोजगार है, तो पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने ये पूरा प्रोटेस्ट खड़ा करने में पहली नींव रखी। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो होना चाहिए, उनमें थोड़ी शर्म होती तो दे देते, शायद वो देना भी चाहे, पर मोदी जी बोलेंगे नहीं यार दे मत, मेरा वो 56 इंच का सीना ना 52 हो जाएगा। So did Prakash Raj a few weeks ago. Veer Das questioned whether a citizen on a prolonged hunger strike should at least receive a conversation. Swara Bhaskar visited Jantar Mantar. Shabana Azmi appealed to Wangchuk to protect his health. Messages also came from Soni Razdan, filmmaker Anurag Kashyap, actor Abhay Deol, Zeenat Aman, Bhuvan Bam, Ashish Chanchalani, Munawar Farooqi and several others. Despite growing the attention, Sonam Wangchuk has remained firm. In his latest message, he urged supporters not to ask him to end his fast. Instead, he called on people to join the proposed July 20th peaceful march to Parliament. According to Wangchuk, ending the fast without any response would send the wrong message.
As Wangchuk's hunger strike enters another critical day, the debate continues to grow, not just around his demands, but also around how different public figures have chosen to respond for now. The conversation shows no signs of slowing down. For more news and updates from the Wall of Showbiz, stay tuned to Times Entertainment. I'm Dipali Patel and I'll see you in the next one.